Assalamu alaikum, dear students, and welcome to our first session on R programming. I'm Dr. Sajjad, and I will be guiding you through this journey into the world of R programming, that what is R programming and why we use this programming. So we will make different videos on this topic, and this course is designed to give you a strong foundation in R programming, starting from the very basic and moving into more advanced topic. तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में आर प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करेंगे कि आर प्रोग्रामिंग क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं और ये किस लिए यूज़ होता है। और इसमें हम बहुत बेसिक से स्टार्ट लेंगे कि हम बेसिक को स्टडी करें, कि हम आर स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड कर सके और फिर हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो इन टुडे सेशन वी विल कवर दैट व्हाट इज आर, why R is important, applications of R, advantages of R. So what is R? R is an interpreted programming language and software environment widely used for statistical computing and data analysis. It was developed by Rose Ehaka and Robert Gentleman at University of Auckland, New Zealand. R प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है और ये एक फ्री सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है और हम इसको यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए. It is one of the most popular tools for data analysis. डेटा एनालिसिस के लिए ये बहुत पावरफुल टूल है, प्रोग्राम है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सोशल साइंसेस एंड डेटा साइंसेस. आर प्रोग्रामिंग को हम डिफरेंट फील्ड्स के लिए यूज करते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए, सोशल साइंसेस के लिए एंड डेटा एनालिसिस के लिए. आर प्रोग्रामिंग डेवलप किया गया है स्टैटिस्टिक एंड डेटा एनालिसिस के लिए और स्टैटिस्टिशियन ने इसको ऑलमोस्ट डेवलप किया है. अब डिफरेंट आर पैकेजेस जब आते हैं तो उसमें वो डिफरेंट फील्ड्स के लोगों ने वो पैकेजेस डेवलप किए होते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई यूज आर, कि आर को हम क्यों यूज करें. So it is a great resource for data analysis, data visualization, data science and machine learning. हम क्यों इसको यूज करें, क्योंकि a great resource for data analysis, great resource में कि इस आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगे इसमें. किस चीज़ के लिए? To visualize your data, कि आपने डेटा को विजुअलाइज कर सको, डेटा साइंस में आप इसको यूज कर सको और मशीन लर्निंग में आप इसको यूज कर सको. The second one is it provides many statistical techniques such as statistical test, classification, clustering and data reduction. Our software will provide you different statistical technique. For example, अगर हम एक statistical analysis करना चाहते हैं तो बाज़ दफ़ा हमें वो सॉफ्टवेयर चाहिए और जब हम वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर में क्लियरली लिखा होता है कि यू हैव टू सब्सक्राइब दैट, वो फ्री नहीं है. लेकिन आर इट इज़ टोटली 100% फ्री. इसमें आपके पास डिफरेंट स्टैटिस्टिकल पैकेजेस है जो क्लासिफिकेशन करते हैं, आपके डेटा को क्लस्टराइज करते हैं, क्लस्टरिंग करते हैं और आपकी डेटा को अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं, मैनिपुलेट मीन कि आप डेटा से कुछ डिलीट करना चाहते हैं, डेटा में कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो आप आर के जरिए उसको इजीली कर सकते हैं. The third point, it is easy to draw graphs in R like pie chart, histograms, box plot, scatter plot, etc. etc. आर में ग्राफ्स बनाना बहुत इजी है. जब
आपको थोड़ी बहुत आर की नॉलेज हो तो आप इजीली इसमें ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप के ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, हाउ पाई चार्ट्स हो, हिस्टोग्राम हो, बॉक्स प्लॉट हो, स्कैटर प्लॉट हो या कोई और टाइप का ग्राफ हो, तो आप इजीली इसमें ड्रा कर सकते हैं। The fourth one is the most important point. It work on different platforms. R, ये आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो ऑन विंडो, ऑन मैक, ऑन लिनक्स, ऑन यूनिक्स, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप सब में R इंस्टॉल कर सकते हो। The fifth point is it is open source and free. As I mentioned before कि R एक ओपन सोर्स पैकेज है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। इट हैज अ लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। R has a large community support. Large community support mean कि बहुत ज्यादा लोग R को यूज करते हैं। तो जब बहुत ज्यादा लोग R को यूज करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको जब आपके सॉफ्टवेयर में या आपके एनालिसिस में जब भी कोई बग आएगा, जब भी कोई एरर शो करेगा, तो आपको बहुत इजीली इसके बहुत ज्यादा सोल्यूशन मिल जाएंगे क्योंकि इसकी लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है। बहुत ज्यादा लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड किसी भी जगह किसी भी कंट्री से आपको सपोर्ट करेंगे उसमें और आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इट हैज मेनी पैकेजेस, लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस। पैकेजेस क्या है? वी विल डिस्कस दिस इन लेटर, बट पैकेज आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं। आप कंप्यूटर को एग्जांपल ले लो कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा एंड इंटरप्रेट डेटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको आप इनपुट देते हो, वो प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है। अब एक कंप्यूटर को आप एक मैथमेटिशियन यूज करता है तो वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करेगा और डिफरेंट इनपुट देगा और डिफरेंट रिजल्ट लेगा। अब एक आप कह सकते हैं एक ग्राफिकल डिजाइनर है, वो कंप्यूटर को यूज करेगा तो कंप्यूटर को डिफरेंट पैकेजेस, उसके कंप्यूटर के वो डिफरेंट पैकेजेस यूज करेगा। he will use different packages of computer, he will give different input to the computer and he will get different output from the computer। so वही एक कंप्यूटर है, वही एक चीज है, लेकिन डिफरेंट पैकेजेस से आपको डिफरेंट इनपुट और डिफरेंट आउटपुट आपको आएंगे। सो द सेम R is a programming language but it has multiple packages. Up till now there are almost 19,000 R packages. So many people will use these R packages according to their needs, according to their specialization, according to their fields. And why they will use different packages? Because to solve their problem, to get their data. Application of R programming, अगर आप देखें तो एप्लीकेशन ऑफ आर प्रोग्रामिंग के हम कहाँ पे आर प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं। सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ आर प्रोग्रामिंग, आप कह सकते हैं इसको आप एकेडेमिया में यूज करते हैं फॉर डेटा एनालिसिस, रिसर्च एंड पब्लिशिंग। ओके, you can use it in industry, like different company use R for data analysis and predictive modeling in finance, marketing and healthcare. Okay, government, R is used for research, for analysis and reporting, for genetics and bioinformatics. Okay, so R is used for analysis of large data set, visualizing gene expression and many more. Okay, and data science, R is go-to tool. You can say that in the data science for handling and visualizing complex data. So you will think about that we can also analyze data, we can also visualize data and Excel sheet in some other softwares. So yes, you can it, but when you have a complex data,
When you have a huge data set, then sometime Excel sheet and sometime other software, it will be very difficult to analyze that data by using those software. But when you come to R will handle this data, like the huge data set, very easily. Okay, and you can clean the data, you can analyze the data. For example, R language provide many libraries for data science. For example, this deployer, ggplot2, Shiny. There are many libraries. As I mentioned before, there are mostly more than 90,000 library available for R for different data analysis. And different companies, like you can take like Google, Facebook, Bing, Twitter, these all big giants, they are using R for their data analysis and reporting. Now in this slide, you can see that based on visit to Stack Overflow question, जो जनवरी टिल अगस्त 2017 में हुआ था कि आर यानी कितना यूज़ होता है एंड कौन कौन से इंडस्ट्री में ये कितने कितने परसेंट ये यूज़ होता है आर प्रोग्रामिंग. तो अगर आप एकेडमिक में देखें तो सबसे ज़्यादा इट विल यूज़ इन एकेडमिक, followed by healthcare, then the government, then the consulting, then the insurance companies, then the energy, finance, retail, media, manufacture, tech and electronics. So you can see that R is used, different companies or different industries, they are using R in their for data in their work, for data analysis, for visualization, for different, for to make reporting. So reports. So the R is used in by these different industries. Here you can see that most mention R packages. That what are the, because as I mentioned before that there are more than 19,000 R packages. So here we will see that which package, like if you compare the packages, so deployer, it is the like the package you mostly use. This survey is in September 2017. So you can see deployer at the top, then followed by ggplot2, data table, Shiny, plier, reshape. So if you are a beginner and if you are just start your journey to R, so you will not understand these packages, but these are the packages you will use in your data analysis. And to show the slide here, to just to know, to show you the importance of R programming, that many people in many big companies, they are using R programming for data, for their data analysis and visualization. As you know that there are many programming languages, Python, C++, R, and so in this slide they just compare the Python and R, because Python is also very important programming language and many people are using Python. But here they compare that in different industries that they are using Python or R. So if you go to healthcare and pharma industries, so R is used 30% while Python is using 27%. If you go to retail CPO, so here also R ahead. Financial services almost equal, 29 and 28. Okay, so just this is not important here, but to show you that R is a programming language which is almost parallel and almost, and you can say with Python, and these both languages are using in industries and for different data analysis, for visualization, for their financial reports, etc. Now advantages of R language. So the first one is R is the most comprehensive statistical analysis package. As new technologies and concepts often appear first in R.
This is the most comprehensive statistical language, you can say that. And as I mentioned before, that R programming is open source, so you can run, you can install anywhere at any time. Okay, R programming language is suitable for GNU, Linux, and Windows operating system. These are the advantages. R programming is class platform and run on any operating system. We also discussed this. In R, everyone is welcome to provide new packages, bug fixes, and code enhancement. This is the very, like you can say, very important points in R, that if you are expert in R, and if somebody like introduce a new package in R, so you can help him to to fix their if any bug in their package. So you can bug mean if अगर उसके पैकेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको इजीली फिक्स कर सकते हैं. अगर उसका जो कोड उसने बनाया है उस कोड को आप इन्हांस भी कर सकते हैं. अगर उसमें कोई गलती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं. और एक और पॉइंट जो आर के एडवांटेजेस में है कि ये एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज के, इसमें बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज है, यानी ऑलमोस्ट 19 to 20,000 लाइब्रेरी है. और ये सारे जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस या डेटा एनालिसिस या डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है. तो आप अपने डेटा के लिए मोर देन वन पैकेजेस आप यूज़ कर सकते हैं. आप जो भी आपको ठीक लगे कि ये पैकेज ठीक है और ये मेरे डेटा को अच्छी तरह विजुअलाइज कर सकता है, अच्छी तरह एनालाइज कर सकता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. द अदर पॉइंट, एक्टिव कम्युनिटी. R programming is, you can say that R community is one of the most supportive, and there are plenty of documents and forums. कि अगर आपको कोई, आप जब आप आर प्रोग्राम यूज़ करते हो और अगर आपको कोई मसला हो, तो आर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और आपको बहुत ज़्यादा फोरम इसमें मिलेंगे कि वहाँ पे डिस्कशन होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आप एक ग्राफ बनाना चाहते हो और आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अगर उसको गूगल में सर्च करो या किसी भी आर कम्युनिटी में आप सर्च करो, तो आपको हज़ारों जवाब, उसके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. क्रॉस प्लेटफॉर्म आपने ऑलरेडी डिस्कस किया. हाई क्वालिटी ग्राफिकल आउटपुट, ये एक एडवांटेज है आर की. अगर हम एक्सेल शीट में, अगर हम एक्सेल में या कोई दूसरी सॉफ्टवेयर में हम कोई ग्राफ विजुअलाइज करें और हम उसको देखें, तो उसकी और आर की जो क्वालिटी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन the quality of graphical output between R and other software. And R is also, it can integrate with other languages like C++, Python in more flexible way. Like when you go to advanced programming, so then you can say that you can see that R is, you can say that is integrate with other languages also, with Python and with C++ if you need it. Now the question, how to install R and RStudio. Now there is another word, RStudio. R we already discussed that it is a programming language. Okay, so now R we already discussed, it is a programming language. Now RStudio, what is RStudio? RStudio is integrated development environment, which is called IDE. It will provide a user-friendly interface designed specifically for R programming, offering features like syntax highlighting, code completion, and debugging tools that enhance productivity and code quality, making it ideal for completing the R language installation. जब हम R प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो हम R प्रोग्राम को, हम जो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है हमारे, अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, तो जो CMD है, आप स्टार्ट में जाते हो, CMD लिख देते हो, आपको जो ब्लैक स्क्रीन आती है वहाँ से आप इसको रन कर सकते हो और आप R प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हो. लेकिन RStudio क्या करता है, हमें
हर जो भी बिगिनर्स है या जितनी भी विंडो यूज़र है उसको जब वो कमांड लाइन देखते हैं तो उसको लगता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है. Whenever window users they see this command line prompt, so they think that it is not possible and it is difficult and they just give up. But the RStudio, it will give a user like you can say that user friendly interface, a graphical user interface. ये आपको देता है कि आप उसमें जो माउस है उसकी यानी आपको कोड लिखना इतना नहीं पड़ता, आप माउस से वो हैंडल कर सकते हैं. जिस तरह अगर किसी ने आप में बहुत से लोग विंडो यूज़र्स होंगे, बहुत से लोग आप लिनक्स यूज़र होंगे, तो आप देख सकते हो कि व्हेन यू आर यूजिंग लिनक्स सो यू हैव टू राइट एवरीथिंग लाइक इन कोड्स एंड यू कैन enter from one directory to another directory by using something in that terminal. But when you are window user, so you can just click the folder, open the folder, make the folder, delete the folder like this by mouse. So this RStudio, it will give you a user friendly user interface to do the analysis by using R. When we discuss inshallah in the next class, so you will understand that what it mean that RStudio, how it will make it easy for you to use R language. These things I mentioned before, but why we use RStudio? So RStudio को हम क्यों use करें? There are hundred of software which is command line software, which you can run by writing command in the command prompt. But most of the students, most of the beginner, they are facing difficulty to write codes, to run codes in these terminals. So this RStudio, it will make it easy for you. Okay, what project management? You can make a project in R, you can save a project in R, and you can reuse that project in R. इसमें अगर आप RStudio में काम करोगे तो आप एक फॉर एग्जांपल आपने एक स्क्रिप्ट लिखा है, आप उस स्क्रिप्ट को एनालाइज कर सकते हैं, वहाँ से आउटपुट ले सकते हैं और उस स्क्रिप्ट को आप सेव कर सकते हैं और उसी सेव स्क्रिप्ट को आप दोबारा यूज कर सकते हैं. दूसरा जो पॉइंट इसमें है डेटा विजुअलाइजेशन, कि इट सपोर्ट पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी टू इंटीग्रेटेड प्लॉट टूल, कि इस RStudio में डेटा विजुअलाइजेशन के लिए इंटीग्रेटेड प्लॉटिंग टूल्स है. ये आपको अगर जब आप क्लिक करोगे, स्क्रिप्ट रन करोगे, तो ये आपको डायरेक्टली एक विंडो में आपको आपका ग्राफ दिखाएगा. It will show you your graph in another window clearly, so you can make changes directly within seconds. Okay. It enables user to create insightful graph in chart, effortlessly enhancing data representation after the R language installation. But ये important है कि अगर आप RStudio इंस्टॉल करना चाहते हो तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि R प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो पहले से. The third one is package management. So this, by using the RStudio, you can install any package. I will show you that how to install package. You can delete or you can uninstall any package. You can activate package. You can deactivate package. Okay. So ये आपके लिए आसान बनाता है कि एक instead of writing a script, instead of writing a code, you can start, you can activate, you can install any package by a single click of your mouse. Okay. Markdown in R Markdown support. I think it is difficult for the beginner to understand this here, but Markdown in R Markdown support, because for example अगर आप एक रिपोर्ट बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने कुछ ग्राफ बनाए हैं, आपका असाइनमेंट है कि आपका डेटा है और आपने हर डेटा का ये असाइनमेंट है कि आप उसको एक टाइटल दोगे पहले अपने डेटा को, फिर आप डेटा को डिस्क्राइब करोगे, उसके बाद आपका एक ग्राफ आएगा, फिर अनदर डेटा, फिर ग्राफ, और फिर उसके साथ अगर आप चाहते हो कि अगर आपका आर स्क्रिप्ट भी वहाँ पे दिखाई दे तो आप उसको एक यू कैन से दैट असाइनमेंट की शक्ल देना चाहते हो, एक रिपोर्ट की शक्ल देना चाहते हो, इन द फॉर्म ऑफ PDF, इन द फॉर्म ऑफ HTML. So this RStudio will help you to make a report like
R, which is called R Markdown. So you can make it easily. So inshallah, when you learn this R, and when we go to the advanced R, so then you will see that how we can make Markdown and R Markdown in R. Collaboration and sharing. This R Studio facilitate collaboration by supporting version up controlling system like Git, and enabling seamless sharing of the projects and analysis through RStudio server and RStudio cloud, promoting collaboration and after R language installation. Everywhere they mention after R language installation, because RStudio will work in your computer after R language installation. It will not work in your computer without R language installation. R को आप अपने कंप्यूटर में, आर स्टूडियो को आप अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, आप डिफरेंट आर को अपने सर्वर पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, आर को आप क्लाउड पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, और आप डिफरेंट जितने भी सिस्टम्स है उसके दरमियान आप डेटा को शेयर भी कर सकते हो. तो उसके लिए कुछ अलग रूल्स है, बट इट विल हेल्प यू इन कोलैबोरेशन एंड डेटा शेयरिंग. So in this class, I think it is enough today to just the introduction of R, that why we use R, how we can use R, and what are the advantages of R. So in the next class, inshallah, we will discuss about how to download and how to install R in RStudio in your computer. Thank you very much.